Good morning, all of you. Again, welcome back in the class. Now we are going to prove equal chords of a circle are equidistant from the center. There is a relation equal chords and the distance from the centers. So this is the theorem 10.6. Equal chords of a circle are of a circle and or the congruent circle. You can prove in the same circle or you can take two circles, so it is easy for you to prove this result taking two congruent circles. So these two are the circles. Congruent circle means their radius will be same. Two congruent circle COR and CO'R. R means दोनों की रेडियस सेम है, इन विच कोड AB एंड CD आर ड्रॉन सच दैट AB इक्वल टू CD, ये दोनों कोड्स इक्वल हैं, एंड OP परपेंडिकुलर टू AB, OQ परपेंडिकुलर टू CD. बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी ऐसा हमें प्रूव करना है. सो दैट्स वाई वी नीड टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स. टू प्रूव करना है OP इज इक्वल टू OQ, ये इसकी इक्वल होगी. कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OA एंड OC. प्रूफ OP परपेंडिकुलर टू AB, ये हमारा गिवन है, ये हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है. तो देयरफॉर AP विल हाफ ऑफ AB बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो इट मीन्स ईच पार्ट विल इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ. सो सिमिलरली CQ विल हाफ ऑफ CD, but AB is equal to CD, this is given, therefore AP is equal to CQ. You can give name third to this. Now we can consider triangle. Now in triangle OPA and O'QC, angle 1 is equal to angle 2, each 90 degree. OA is equal to OC, radii of congruent circle. Congruent circle and AP is equal to CQ from third. Therefore triangle OPA congruent to triangle O'QC by RHS rule. So therefore we can say OP is equal to O'Q. Hence proof. Now the next theorem 10.7 is just converse of the theorem 10.6, in which OP is equal to O'Q is given and we have to prove AP is equal to CQ. So given will be same. What we need to change, construction will be same. To prove given आपका सेम होगा, टू प्रूव AB is equal to CD, construction join OA and OC. Proof in triangle OPA and triangle O'QC, angle 1 is equal to angle 2, each 90. OA is equal to OC, radii of congruent circle. And AP is equal to CQ given. Therefore triangle OPA
congruent to triangle O dash QC by RHS rule. So we get therefore AP is equal to CQ. Therefore you can write directly, therefore AB is equal to CD रीजन लिख देंगे परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड. Hence proof. Now the question number first, two circles of radii of exercise 10.4. Question number first, two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. The distance between their center is 4 cm. Find the length of common chord. ये दो सर्कल है हमारे पास. ये सेंटर है दोनों के. AB is the common chord. The radius of this circle is 5 cm. This one is 3 cm. Distance between them, between their center is 4 cm. We have to find the length of common chord. So just we have proved in exercise 10.3 question number 3 that the line joining to the center is perpendicular bisect the common chord. Since line joining the centers of intersecting circles is bisect the common chord at right angle at 90 degree. हम इसको प्रूव कर चुके हैं. इफ यू वांट टू प्रूव दिस रिजल्ट देन यू हैव टू यूज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.3 completely. So it become very longer, so you can use this concept because that is here as a theorem. तो यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री है और ये इसको बाइसेक्ट करता है. So now you can consider right triangle OMA and O'MA. In both the triangle AM will be equal, so we can let it. Now let OM is equal to X, then O dash M become 4 minus X. Since
OO dash is equal to 4 centimeter. Now in right triangle OMA and triangle O dash MA, हम यहां पर AM फाइंड करेंगे. AM स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम. इक्वल टू OA 5 स्क्वायर है माइनस OM को हमने एक्स लेट किया है एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इन राइट ट्राइंगल O डैश MA, यहां पर भी हम AM फाइंड करेंगे. AM स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश A स्क्वायर माइनस O डैश M स्क्वायर. परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू O डैश A इज 3, तो 3 स्क्वायर माइनस O डैश M हमारे पास 4 माइनस एक्स है. गिव नेम सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. 5 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स पावर 2. तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस a minus b whole power 2. So 4 square means 16 plus x square b square minus 2ab 4 2 8 x. 25 minus x square is equal to 9 minus 16 minus x square plus 8x. Minus x square से minus x square can be cancelled. So we get 16 को हम ट्रांसफर कर देंगे. So 8x is equal to 25 हमारे पास ऑलरेडी प्लस का है. 16 आकर के प्लस का हो गया माइनस 9. So we get 8x is equal to 41, 32. So x is equal to 32 upon 8, 4 centimeter. He is asking here to find the length of common chord. Now you can put this value x is equal to 4 in any one equation. Using first AM square is equal to 5 square minus 4 square. 25 minus 16 is equal to 9. So AM is equal to 3 centimeter. Thank you.